The servant of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with him in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servant risk everything for the service of the Lord. So are very dear to the Lord. The Lord is declared in Bhagavad Gita that no one is dear to him than one who risks everything to preach his glories. By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servant. So by serving the servant of the Lord, we develop the quality of that servant. When you serve Prabhupada, we develop the qualities of Prabhupada. And thus one becomes qualified to hear. Thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. So to become qualified to hear, to serve, so that we can do the power. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of Godhead. भगवान के धाम जाने का पहला क्वालिफिकेशन, पहले क्वालिफिकेशन की बात, क्वालिफिकेशन छोड़ ही दो. So the first qualification to develop eagerness to hear about Krishna. So when we develop, and by hearing Shravratam Sah Katha Krishna Punya Shravan Kirtana Hridayantastho hi abhadrani vidhnoti suhrit satam. So by hearing this, हृदयंतस्त, हृदय में अभद्राणी जो इम्प्योरिटी है, विधनोती, तो हमारे हृदय में जितनी अशुद्धियां हैं वो सभी हो जाती हैं. श्रवणताम सह कथा कृष्णा पुण्य. इवन हियरिंग इज ए ग्लोरियस एक्टिविटी. हमको लगता है हम हाथ पैर जब तक ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो वो सेवा नहीं है. बट यहाँ पे जो बताया गया प्रभुदा, टू हियर अबाउट कृष्णा, हियर. बाय हियरिंग बिकम क्वालिफाइड टू सर्व कृष्णा. एंड यदि आपके अंदर हृदय में सच्ची इच्छा है तो आपसे ज्यादा प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ईगर है भक्ति फैलाने के लिए. भगवान का एक ही एम है, कैसे भी लोग यहाँ सुधर के हमारे धाम चलाए. There's no other aim, no other purpose for Krishna. यदि आप थोड़ा सा सिंसियर, आपके अंदर में हृदय में इच्छा है, और यदि कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, भगवान उसको शुद्ध कर देगा. बट जो एक सिंसियर डिजायर होनी है, और बाय हैविंग दैट सिंसियर डिजायर, कृष्णा विल हेल्प अस. सो इसी के परपट में लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, we have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotees of the Lord. So the developing the taste for hearing and chanting the holy sound, यदि हम शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करें तो हम कोशिश करेंगे, फिर भी हम हमारा जो हमारा कृष्ण कथा के प्रति सुनने का अट्रैक्शन वो ज़्यादा नहीं. By grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbance, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. So gradually, slowly, when we keep hearing about let's say Nityam Bhagavat Sevya, when we hear about Bhagavatam daily, then we come to platform, nothing can disturb in this world. Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, just a lot of example, they were never get shaken. Even हमारे Chitraketu, even his cause, he accepted very humbly. No, he got down from the aeroplane, he paid obeisances. He said, Mother, I accept whatever you said. तब जब चित्रकूट ऐसे करते हैं, तब शिव जी
ग्लोरीफाई करते हैं किसको, कि सी द डिवोटीज ऑफ कृष्ण इज नॉट लाइक यू। पार्वती जी को बोल रहे हैं नारायण सर्वे ना कुतश्चन विवियति। जो भगवान के भक्त है नॉट ऑर्डिनरी,